Assalamu alaikum. Welcome back to the Pair of Words course. This is Pair of Word number 5, which is advice and advise. The pronunciation of advice and advise is very simple. You can understand it from this slide. इस advice में ये C की जगह S pronounce होगा तो ये होगा advice, और इस advise में ये S की जगह Z pronounce होगा तो ये है advise, which is very simple. एडवाइस जो कि एक नाउन है, इससे मुराद एक सजेशन या रिकमेंडेशन होता है। मिसाल के तौर पे टॉम सेज दैट ही डज नॉट नीड एनी एडवाइस। टॉम कहता है कि उसे किसी मशवरे की जरूरत नहीं। माई फादर्स एडवाइस वॉज क्वाइट यूजफुल। मेरे वालिद का मशवरा काफी अच्छा था। द एडवाइस ऑफ एल्डर्स ऑलवेज टर्न आउट बेनिफिशियल। देन कम्स एडवाइस विच इज अ वर्ब। इसका मतलब है किसी को मशवरा देना। ये एक प्रोसेस है, ये एक वर्ब है जिसमें आप किसी दूसरे को मशवरा देते हैं। The definition is to give someone a suggestion, an advice or recommendation. किसी बंदे को कोई सजेशन देना, मशवरा देना या कोई रिकमेंडेशन देना। Examples: It is easy for you to advise, but difficult to take advice from others. I would advise you to read this book. Only honest people advise you properly. At the end of the lecture, this is an exercise for you which should be attempted carefully. किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए जो ज़रूरी चीज़ होती है वो है प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका उस लैंग्वेज पे कमांड बढ़ता जाएगा। So this is an exercise for you which I have left for you. In case you face any problem while attempting this exercise, you can let me know in the comment section. So it was all. See you in the next video.